Hello students, in this video I am going to explain the exercise of chapter number 21. The first question is based on MCQ. Question is, the body entrusted with the responsibility of conducting free and fair election in India is the correct answer is Election Commission of India. Next is, in India, people cast their vote through, the correct answer is EVM. Third, a political party whose influence is limited to one or two states is called a regional party. Fourth one, the first coalition government was formed in India in 1977. Fifth, opposition parties in India play an important role in, the correct answer is keeping the check on the government. Now come to the another question that is based on true false. Okay. First question, the value of the vote of a citizen, rich or poor, literate or illiterate, man or woman, is the same. The statement is true. Second is, in India there are three types of election. Yes, the statement is also true. Yes, three type of elections. What are the three types? Single party system, general election, and then midterm election, and then by-elections. This three types of elections. Third question is, everyone in the country is allowed to vote. It is false. It is false. Why it is false? Because not everyone is allowed to vote, but only those having the age of 18 or more than 18, they are allowed to vote. Fourth question is, in a coalition government, some parties get together to form the government. It is true. Now the third question is, answer the following in one sentence. First question, at what age is a citizen of India allowed to vote? The correct answer here is, in India, all citizens who have attained the age of 18 are given the right to vote. Okay. Now question number 2. What is meant by the term constituency? Answer, for the purpose of electing a representative to the Lok Sabha, the country is divided into several constituencies, which are geographical areas that elected candidates represents. Means geographical area के हिसाब से, population के हिसाब से country को divide कर दिया जाता है, and that is called constituency. Okay. Next, question number 3. What is an election manifesto? Answer is, election manifesto are released by political parties during the time of elections for outlining the programs and policies a political party commits to implement if voted to power. मीन्स यदि पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएंगी तो क्या वेलफेयर प्रोग्राम्स दे कैन डू फॉर द पीपल, वो कमिट्स करती है. दैट इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टोस. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर election symbols? See, the election commission, answer is, the election commission allocates election symbols to all independent candidates and political parties so that voters can recognize the candidates and parties they are voting for or support during an election. आप सबने देखा ही होगा कि जब भी वोटिंग होती है तो किस तरह से पर्टिकुलर पार्टीज़ की एक एक सिम्बॉल्स होते हैं. जैसे बीजेपी की कमल है, कांग्रेस की पंजा है. तो इस तरह से ये सिम्बॉल्स के थ्रू
जो people है they come to know, they can recognize the person is belonging to which party. Okay, now come to the question number 5. What is campaigning? What is campaigning? Answer is, campaigning is the process where political parties try to, candidates of various political parties try to persuade the voters to vote for them over their rivals through the use of meetings, speeches, banners, etc. Once again I am repeating, campaigning is the process where candidates of various political parties try to persuade the voters to vote for them over their rivals through the use of मीटिंग्स स्पीचेस एंड बैनर्स. तो मीटिंग्स स्पीचेस और बैनर्स के थ्रू जो वोटर्स हैं वो पीपल को जो कैंडिडेट्स हैं वो पीपल को पर्सुएड करते हैं, वोटर्स को पर्सुएड करते हैं कि दे कीप वोट फॉर देम ओवर देयर राइवल्स. ठीक है, मीन्स उनके जो विरोधी हैं उसके खिलाफ में वो वोट उनको दे. तो दिस प्रोसेस इज़ कंडक्टेड थ्रू द मीटिंग स्पीचेस बैनर्स और इसको ही क्या कहा जाता है, कैंपेनिंग. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ. ब्रीफ थोड़ा सा आपको इसमें 4 to 5 लाइन्स में आंसर देने पड़ेंगे. ठीक है. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ universal adult franchise in a democracy? Briefly describe the history of universal suffrage around the world. अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि क्या महत्व है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का और ये कहाँ से कैसे अडॉप्ट किया गया, कैसे सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको मान्य हुआ, उसके पीछे हिस्ट्री क्या ये आपको बतानी है. ठीक है. नाउ द आंसर इज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स दैट द राइट टू वोट इज गिवन to all citizens of a country without any discrimination on the basis of religion, region, caste, sex or property. India follows the principle of one person and one vote. It signifies political equality and ensures that a democratic government is accountable to the people. And it has been achieved over a period of time. सबसे पहले ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है फ्रांस इज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द रेवोल्यूशन of 1848. Then workers in England started the Chartist movement and won the right to vote only after a long drawn struggle. Afterwards, in America, the African American were given the right to vote in 1965. In 1893, New Zealand became the first country to implement universal adult franchise. सबसे पहले implement कहाँ किया गया, न्यूजीलैंड में 1893 को. ठीक है. Now India implemented it in 1950 while after the constitution come into force. Next question, how does the election commission conducted free and fair election in India? तो किस तरह से फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराता, तो 8 स्टेप्स हैं वो हम देखेंगे. हाँ, इसमें A general election is conducted in India after every 5 years to form a new government at the center. It takes place all over the country at the same time. The Election Commission is the independent body entrusted with the responsibility of conducting all elections इंक्लूडिंग द जनरल इलेक्शन इन अ फ्री एंड फेयर मैनर. तो यहाँ पर सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है, कौन है जो इंस्टीट्यूशन है जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर अपने ध्यान रखता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, दैट इज़ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. अब ये करती क्या है ये देखते हैं. इट फिक्सेस एंड अनाउंसेस द डेट्स ऑफ इलेक्शन अक्रॉस द कंट्री. जहाँ जहाँ इलेक्शन होनी है वहाँ पर वो इसको अनाउंस करते, डेट्स अनाउंस करते हैं. इट प्रिपेयर्स द वोटर्स लिस्ट एंड डिटरमाइंस द कंस्टिट्यूएंसी
It gives recognition to political parties and allocates symbols to them. ठीक है. It prescribes the code of conduct for political parties and candidates. It manages voting across polling booths and oversees the counting of votes after the election. Okay, so this way the election commission do the work. Now come to the question number 3. What is question number 3? What is the polling process in India? What is the polling process in India? Let us see. क्या है polling process? Voters go to the polling booth marked for voting in their constituency and cast their vote, a secret ballot or on election day. Every person whose name is on the voter list can go to the polling booth with their voter photo identity card. So cast their vote. The photo identity card helps to check cheating or impersonation. अब इसमें क्या होता है कि जो पोलिंग बूथ में है वोटर्स अपने फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड में लेकर जाता है और फिर पोलिंग बूथ में अपने वोट को कास्ट करता है, लेकिन यहाँ पर उनको अपने साथ क्या ले जाना पड़ता है? फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड. और आपको पहले ही शुरुआत में ही चैप्टर के बताया था TN सेशन इज़ द 10th चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसने इसको इनिशिएट कराया था फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड. और वो भी क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन. मीन्स कोई भी करप्शंस और कोई भी धांधली वगैरह ना हो सके इलेक्शन में, इसके लिए. ठीक है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. Describe the types of election held in India. What are the types of election? There are 3 types of elections. What are that? You have to keep remember. There are 3 types of elections, that is general elections, midterm election, and next is by-election. ठीक है. Now let us see what is general election. General election, this election take place all over the country at the same time. So form a new government at the center. Second is midterm election. These elections take place when no confidence motion has been. लोक सभा में गवर्नमेंट के अगेंस्ट में पास हो जाता है. और थर्ड वन इज बाई इलेक्शन. These elections take place due to the sudden death or resignation of an elected representative in any particular constituency. किसी पर्टिकुलर कंस्टिट्यूंसी में यदि जो उनके कैंडिडेट्स ने रेजिग्नेशन दे दिया या उनकी डेथ हो गई, सडन डेथ हो गई, तो ऐसे सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन बाय इलेक्शन कराती है. अंडरस्टूड. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्शन. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. 5 इज स्टेट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ कोalition गवर्नमेंट. कोalition गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार जो है उनकी क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, वी हैव टू राइट इन दिस क्वेश्चन. तो वी विल सी दैट one advantage of coalition government is that it represents a wider public opinion because it presents different political parties. ठीक है. इसमें क्या होता है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं, जिसके कारण उनको वाइडर ओपिनियन पब्लिक की मिलती है. ठीक है. लेकिन दूसरा डिसएडवांटेज भी है. क्या है? वन डिसएडवांटेज ऑफ ए कोalition गवर्नमेंट इज दैट सच अ गवर्नमेंट इज प्रोन टू डिसएग्रीमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द एलाइज एज देयर आइडियोलॉजी डिफर. मतलब कभी कभी उनकी जो आइडियोलॉजीज, हर एक पार्टीज़ की अपनी अपनी आइडियोलॉजीज होती है, विचारधारा होती है. यदि वो जिस पार्टी के साथ उनकी गठबंधन हो जाती है, उनकी कुछ आइडियोलॉजी उनको नहीं या उनके कुछ एग्रीमेंट्स है, उनके कुछ रेजोल्यूशन है या उनके जो वेलफेयर के लिए जो काम करने चाहती है पीपल के लिए, वो उससे एग्री नहीं होते हैं, तो ऐसे समय में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती है. तो उनको, क्योंकि उनके आइडियोलॉजी डिफरेंट होते हैं. अंडरस्टूड. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5.
Question number 5. Answer the following questions in detail. First is elaborate on the election process in India. अभी हमने ब्रीफ में ही देखा था election process of India 5 points में. उसी तरह से यहाँ पर आपको थोड़ा सा एलाबरेट करना है इलेक्शन प्रोसेस. क्वेश्चन में आपको आंसर अकॉर्डिंग टू द मार्क्स लिखना है. यदि आपने 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए तो थोड़ा शॉर्ट करके आप लिख सकते हो, और यदि आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए तो थोड़ा एलाबरेट कर सकते हो. अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है. द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स. अब क्या स्टेप्स है? फर्स्ट, नोटिफिकेशन, इश्यू नोटिफिकेशन. प्रेसिडेंट इश्यूज नोटिफिकेशन. A notification is issued by the President calling upon the constituency to elect members on a certain date, usually recommended by the Election Commission. Second is filing nomination. Party candidates and independent candidates file their nomination papers on or before the last date for filing ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स. अब सेकेंड प्रोसेस क्या? पहला तो डेट हो गया, दूसरा फाइलिंग नॉमिनेशन, नॉमिनेट फाइल जो थर्ड इज स्क्रूटनी ऑफ द कैंडिडेट्स. अब थर्ड क्या होता है? स्क्रूटनी. मतलब सारी चीज़ें पेपर्स सबमिटेड की तो कैंडिडेट्स की थॉरली चेक की जाती है कि वॉट एवर द इंफॉर्मेशन दे आर गिवन दैट इज़ ट्रू और नॉट. हाँ, तो स्क्रूटनी ऑफ द कैंडिडेट. द नॉमिनेशन पेपर्स सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स आर थॉरली चेक्ड एंड scrutinized by the returning officer, who then publishes the list of contesting candidates. उसके बाद ही contesting candidates के नाम issue होते हैं. Then after allocation of symbols, the election commission approves the allocates symbols to independent candidates. अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए भी सिम्बॉल्स अप्रूव कर दिया है, और एंड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, टू मेक श्योर दैट नो 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैव द सेम और सिमिलर सिम्बॉल. एक जैसा सिम्बॉल ना हो जाए. इससे क्या हो जाता है? यदि एक जैसा सिम्बल हो जाएगा तो जो वोटर्स है उसके लिए कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि वो, क्योंकि वो नाम नहीं देखते, क्या देख कर वोट करते हैं? उनके सिम्बॉल्स. ठीक है, तो इस तरह की जो थिंग्स है उसका भी ध्यान कौन रखता है? प्लानिंग इलेक्शन कमीशन. एज इट मे कंफ्यूज और मिसलीड द वोटर्स. देन इलेक्शन मैनिफेस्टोज. इलेक्शन मैनिफेस्टोज आर रिलीज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस विच आउटलाइन द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी अ पॉलिटिकल पार्टी कमिट्स टू इम्प्लीमेंट इफ वोटेड टू पावर. अब वो क्या करते हैं? मैनिफेस्टोज भी निकलता, रिलीज़ करते हैं. पॉलिटिकल के पार्टी के मैनिफेस्टोज जो रिलीज़ होते हैं वो भी इस टाइम में इसके बाद रिलीज़ होते हैं. नॉमिनेशन उनको सिम्बॉल्स मिल जाता है. फिर उसके बाद फिर उसके बाद क्या होता है? पोलिंग सिटीजन हुज नेम आर on the voters list go to the polling booths and cast their vote through a secret ballot. अब वहाँ पर पोलिंग बूथ में जाते हैं और सीक्रेट बैलेट के थ्रू अपने वोट कास्ट करता है. कौन करता है? वोटर्स. सेकेंड लास्ट इज काउंटिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स. उसके बाद क्या होता है? काउंटिंग ऑफ वोट्स टेक्स प्लेस एट अ सेंट्रलाइज्ड प्लेस अंडर हेवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स ऑन अ डे फिक्स्ड बाय इलेक्शन कमीशन. अब क्या होता है इसके बाद कि जो अरेंजमेंट्स हैं, जितने भी वोटर्स जो काउंटिंग होती है उनके सारे ईवीएम मशीन को एक जगह सेंट्रलाइज प्लेस में ले जाया जाता है, और फिर वहाँ पर पूरे सिक्योरिटी के साथ उनके काउंटिंग शुरू होती है. देन इलेक्शन पिटीशन. अब एक लास्ट है प्रोसेस इलेक्शन पिटीशन. इसमें क्या होता है? इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ डाउट्स अबाउट द यूज़ ऑफ अनफेयर मेथड्स और चीटिंग. मतलब किसी को लगता है कैंडिडेट को कि मेरे पोलिंग बूथ में इस तरह से चीटिंग हुई है, कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में जो डिस्ट्रॉय हो गए, लॉस्ट हो गए, तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? जो कैंडिडेट्स है वो फाइल पिटिशन कर सकता है इन द हाई कोर्ट एंड फ्रेश इलेक्शन कैन बी ऑर्डर्ड. और फिर उसके बाद वहाँ पर
इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑर्डर हो सकता है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, इफ़ ए कैंडिडेट हैज़ डाउट्स अबाउट द यूज़ ऑफ अनफेयर मेथड्स और चीटिंग इन द इलेक्शन प्रोसेस, he or she can file a petition in the high court and fresh election can be ordered. ठीक है। Now come to the question number 3. How are national political parties different from regional political parties? कैसे ये different है? ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्राइटेरियाज़ हैं, मीन्स वो क्राइटेरियाज़ में कोई एक क्राइटेरिया यदि फुलफिल हो जाता है, now the fifth question is, who forms an opposition? How is the opposition important in democracy? The answer is, now come to see the answer. In parliamentary democracy, the party which fails to win the election become a part of the oppositions. जो जीत नहीं पाते, जो party of the opposition. The opposition keeps a check and government policy, keeping in mind welfare of the country and the people. It creates public opinion by holding डेमोन्स्ट्रेशन रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग्स। अब इनका क्या काम होता है, ये जो अपोजिशन है वो जो गवर्नमेंट जो मेजॉरिटी पार्टी है उनके वर्क्स को चेक करती रहती है कि वट एवर द पॉलिसी इज़ adopted by the government that is doing the work for the welfare or not, ये सारी बातें ऑपोजिशन ध्यान में रखती जाती हैं। और यदि उनका कुछ ऐसा समथिंग गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग फॉर प्रॉपरली फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो ऐसे समय में इट क्रिएट्स पब्लिक ओपिनियन बाय होल्डिंग डेमोन्स्ट्रेशन रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू उनको विरोध करती हैं। अंडरस्टूड? तो इन दिस वे आवर होल explanation of this chapter is over. You have to write the things in your notebook. Okay, thank you students.